Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज आमर डे 2 वीडियो माने PYQ सीरीज एथरे हमको 2012 रू नेकी 2022 भितरे एग्जाम रो जो क्वेश्चन आस्तिला तमरो CHSE बोर्ड एग्जाम रे जो क्वेश्चन उडा आस्तिला से क्वेश्चन उडा आंसर मिलियो एथरे 1 मार्क क्वेश्चन अछि 3 मार्क क्वेश्चन अछि और 5 मार्क रो क्वेश्चन मध्ये मिलियो हां वी आर ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल बट वीडियो बेसी लंबा हे होछि सेति हमें 45 रू 1 आवर भितर वीडियोटा करछु बिटवीन 45 टू 1 आवर माने तुमको गोटे ग्लिम्स मिलियो कि प्रीवियस ईयर हम केमती टाइप रो क्वेश्चन आस्तिला आ हम जो वन शॉट वीडियो रे जो क्वेश्चन उडा करले तार केतिक रिलेशन अछि या सहित जदी वन शॉट वीडियो टा देखिनथि वन शॉट वीडियो रो भले कि देखियो देखो सबुठ इंपोर्टेंट होछि वन शॉट वीडियो एटा होछि तमरो कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट वीडियो देखला पर तुम जानि परियो केतिक सिखलो केतिक न सिखलो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग हाउ मेनी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व से सब तुमको जाना पड़ला पर PYQ आसिले तुमको एमती लागो हां जो क्वेश्चन उडा मु करथिली जो क्वेश्चन उडा मु प्रिपेयर करथिली ठीक सेमती टाइप रो क्वेश्चन ही आसी सो नो प्रॉब्लम आई विल बी एबल टू सॉल्व इन द एग्जाम आल्सो हां तो ए कॉन्फिडेंस टा को नै कि तमे PYQ पाखु आसीबो जदी तमे वन शॉट वीडियो टा को फॉलो की देखिनो वन शॉट वीडियो लंबा वीडियो काई ना एटा को पूरा चैप्टर कांसेप्ट को कवर करियो फार्मूला सहित सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम नै जाइछु टेक्स्ट बुक रो प्रीवियस ईयर मध्ये बहुत क्वेश्चन से भीतर थिवो तुम जो देखियो PYQ सीरीज रे मते बहुत गुड क्वेश्चन हे पारे वन शॉट वीडियो रे हम कवर करछु तो से सबुटा भलो कि देखो जदि न देखियो वन शॉट टा किछि फायदा नै प्ले ठीक आसी तो पूरा वीडियो टा को देखियो वन शॉट टा को लेखियो सॉल्व करियो हमें तुमको PDF फॉर्मेट रे हमरो टेलीग्राम ग्रुप टा को जॉइन कर दो टेलीग्राम ग्रुप टा को जॉइन कर दो व्हाट्सएप ग्रुप टा को जॉइन कर दो अब हम मैसेज करतो कंसिस्टेंटली हां कंसिस्टेंटली व्हाट्सएप रे मैसेज करियो और हमरो चैनल रे जाई कमेंट करियो और कमेंट करियो निजर ना सहित जो माने ओरिजिनल ना सहित कमेंट करियो प्लीज है ना आउ आजकल जिमता आसु ना सब अलगा अलगा ना रहछ हां लवर बॉय रॉबिन हुड ए सब ना रे करियोनी ओरिजिनल ना रे करियो सो दैट विल कम टू नो कि यू आर द पीपल व्हिच आर द कंसिस्टेंट यूजर्स हां हमर कंसिस्टेंट यूजर अछ सेत पे हम कोन करियो हम ए चैनल रे जो पिला माने देखि कि हां भलो मार्क्स आनिबे माने मोर देन 90 आनिबे मैथ्स रे जेति कि पिला होंतु हां मोर देन जो 90 मार्क्स आनिबे हम तो कस्टमाइज्ड टी शर्ट दोछ you are providing customized t-shirt माने अगर कृष्णन मैथ्स इन द टाइप थियो कॉलर वाला टी-शर्ट एमते राउंड नेक नो कॉलर वाला एटा तो मु हां मोर ब्रांडिंग पाई करछि तो कॉलर वाला टी-शर्ट हम तुम मानु प्रोवाइड करबो हां जो माने केते मिलियो से माने 90 प्लस सेति पय तुमको निजर मार्क शीट हमको शेयर करियो पड़ियो पर आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट मार्क शीट शेयर करियो तो बेस्ट विशेस कि भलो करो समस्त आउ तापर PYQ सीरीज टा देखियो चेष्टा हां ठीक अछि आज हम वेक्टर स्टार्ट करियो Question number 1. Write the unit vector. Write the unit vectors which makes angle of 45 degree and 60 degree with positive direction of x-axis. Basics आगे कर दो भाई. Basics कौन होता है? अगर कोई लाइन जदि गोटे लाइन x-axis सहित 45 degree बनौची so alpha equal to 45. Y-axis संगर जो angle बनौची that is beta which is 60 degree. And the angle made by the line with z-axis will be gamma. तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन होती है? डायरेक्शन कोसाइंस होती है L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, N is equal to cos gamma. cos alpha, cos beta, cos gamma. ये होती है डायरेक्शन कोसाइन. तो यूनिट वेक्टर कौन होगा? यूनिट वेक्टर is u cap. U cap is equal to L into I cap plus M into J cap plus N into K cap. सो जो वेक्टर टाको आपण डायरेक्शन कोसाइन सहित लिखिबे दैट इज यूनिट वेक्टर और जो डायरेक्शन रेशियो सहित लिखिबे दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन सहित जो वेक्टर लिखिबे सेटा यूनिट वेक्टर और जो डायरेक्शन रेशियो संग लिखिबे दैट इज ओनली वेक्टर डायरेक्शन रेशियो कोन होची ABC होची सो A into I cap plus B into J cap plus C into K cap दिस विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोस तो डायरेक्शन रेशियो रो कोन मिलियो वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन रो कोन मिलियो यूनिट वेक्टर ये दुईटा जिंस बेसिक जिंस एटा मन रखे अबे क्वेश्चन को आसीबा व्हाट द क्वेश्चन सेज गिवन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री आपन x एक्सिस होता एंगल दिया है केते एंगल 45 डिग्री y एक्सिस होता एंगल दिया है 60 डिग्री गामा आपन ढूंढिया पड़े यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा कंडीशन कोन होची डायरेक्शन कोसाइन रो कंडीशन होची cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा plus cos square gamma is equal to 1 and alpha is 45 degree so this is equal to cos square 45 degree
plus cos square beta, beta is equal to 60 degree, plus cos square gamma, this is equal to 1. Cos 45 degree 1 by root 2, the square hochi 1 by 2, 1 by root 2 the whole square. Cos 60 1 by 2, 1 by 2 the whole square. Cos gamma, so which is cos square gamma, and that is equal to 1. So this will be 1 by 2, 1 by root 2 square regla 1 by 2, 1 by 2 ro square regla 1 by 4, plus cos square gamma is equal to 1. 1 by 2 plus 1 by 4 add कर दियो, regla 3 by 4. 3 by 4 plus cos square gamma is equal to 1. So what about cos square gamma? Cos square gamma is equal to 1 minus 3 by 4. 1 minus 3 by 4 is equal to 1 by 4. And what about cos gamma? Cos gamma equal to square root of 1 by 4. And square root of 1 by 4 is plus minus 1 by 2. So unit vector कौन है? Unit vector is L into I cap plus M into J cap plus N into K cap. ये हो जाए अपना unit vector. L into I cap plus M into J cap plus N into K cap. This is what your unit vector is. Now, L रो value होची cos 45. Cos 45 into I cap plus cos 60 into J cap. Cos gamma तो जानते हैं हमें वैल्यू प्लस माइनस 1 by 2 into K cap. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो. This is 1 by root 2 I cap plus 1 by 2 J cap plus minus 1 by 2 into K cap. So this is the required unit vector. ठीक है जी? एटा गला आंसर. This is your answer. Correct? कौन कले? अल्फा बीटा गामा होची डायरेक्शन कोसाइंस. अल्फा कौन होची cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. अल्फा बीटा गामा कौन होची एंगल अल्फा को एंगल जोड़ा x एक्सिस सहित बनिबो दैट इज अल्फा, जोड़ा y एक्सिस सहित बनिबो दैट इज बीटा, और जोड़ा z एक्सिस सहित बनिबो दैट इज गामा. तो cos अल्फा I कैप, cos बीटा J कैप, cos गामा K कैप. दिस इज यूनिट वेक्टर. cos अल्फा को LMN कहि परियो, L into I, M into J, N into K, राइट. बट LMN यहां पे दिया नहीं था. एठी हमको LMN तीनटा जा जिंस दिया है. कौन कौन दिया है? x एक्सिस सहित एंगल माने अल्फा दिया है, y सहित एंगल माने बीटा दिया है, z सहित एंगल हमको बाहर करियो पड़े. ता पे कंडीशन कोन? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1. से थ्रू गामा बाहर कर यूज कर. ठीक है. Now the next question. Question number 2. Question number 2 is this came in 2014 exam. Write the value of alpha if the vectors a bar and b bar are parallel. Dita vector hocha और दुटा vector parallel. Basic जिनसे कौन है इतने? The basic thing is if two vectors are parallel, one can be expressed as a scalar multiple of another. जदि दुईटी वेक्टर पैरेलल अछंती, गोटे वेक्टर को आ गोटे वेक्टर स्केलर मल्टीपल रे एक्सप्रेस कर परियो. दैट इज a बार इज इक्वल टू k into b बार. b बार को a बार से डिवाइड कर दियो. a बार डिवाइड बाय b बार विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. तो दुईटा वेक्टर रेशियो कोन हो? कांस्टेंट. तो दुईटा वेक्टर तो डिवाइड होबनी. कोन डिवाइड हो? कोएफिशिएंट्स डिवाइड हो. सो व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल. लेट जदि तब वेक्टर a bar is equal to empty अछि a1 into I cap plus a2 into j cap plus a3 into k cap. Let the vector a bar will be like this. b bar is equal to b1 into I cap plus b2 into j cap plus b3 into k cap. For parallel, if a bar parallel to b bar, ratio of the coefficients, I cap ro coefficients ratio, that is a1 by b1 will be equal to a2 by b2 will be equal to a3 by b3. This is the condition. A condition to one रखो. This is for both parallel as well as collinear vectors. अब देखो a bar कौन दिया है? Given a bar is equal to what is given 2 into I cap plus 3 into j cap minus 6 into k cap. This is a bar. And b bar is equal to alpha into I cap minus j cap plus 2 into k cap. And since condition is also given, what is the condition? A bar is parallel to b bar. It happens this. A bar parallel to b bar. So a bar parallel to b bar ho, therefore coefficient ratio equal ho. Coefficient ratio माने 80 I रो coefficient होची 2
and from B bar the coefficient of I is alpha. So 2 by alpha equal to J coefficient ratio 3 by minus 1, K coefficient ratio is minus 6 upon 2. So this is 2 by alpha is equal to minus 3. This is also equal to minus 3. So 2 by alpha को, therefore 2 by alpha is equal to minus 3. Minus 3 to divide कर दिया. So alpha is equal to minus 2 upon 3. So this is the value. अगर अल्फा वैल्यू जब अल्फा वैल्यू -2/3 होगा, if the value of alpha is -2/3, then these two vectors will be parallel to each other. तो कौन मन रखियो, when two vectors are parallel, ratio of the coefficients are equal. Important point ना, when two vectors are parallel, ratio of the coefficients are equal. कोफिशिएंट रेशियो कौन हम इक्वल, कोफिशिएंट माने दुटा जो वेक्टर है आई जे के जो कोफिशिएंट हो से माने डिवाइड करिवे तार आंसर कोन आसी कांस्टेंट आसी और सेही कांस्टेंट एठी हमर हे गेला द वैल्यू ऑफ अल्फा. करेक्ट. क्या आगु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द वैल्यू ऑफ m and n for which the vectors this and this will be parallel. Again parallel condition कोन हो, when the vectors are parallel, ratio of the coefficients are equal. कोफिशिएंट रेशियो माने 80 i रो कोफिशिएंट होची m - 1 divided by m plus 1 will be equal to n plus 2 divided by n minus 2, k रो coefficient 4 divided by 8. Now what is 4 by 8? 4 by 8 will be equal to 1 by 2. m minus 1 by m plus 1 is equal to 4 by 8, that is 1 by 2. And similarly n plus 2 by n minus 2, this is also equal to 1 by 2. Cross multiply कर दियो, 2m minus 2 ये 2 का a3 मल्टीप्लाई है, ये 1 आसी a3 मल्टीप्लाई, राइट. तो 2m minus 2 equal to m plus 1. m को लेफ्ट साइड नहीं जो 2m minus m is equal to 1 plus 2 will be 3. 2m minus m is m is equal to 3. Again cross multiply करो ये 2n plus 4 n minus 2. 2n minus 2 equal to minus 2 minus 4 will be minus 6. 2n minus n है ना. 2n minus n will be equal to n and n is equal to minus 6. Eta होची n. This is 2n minus n equal to minus 6, which is n equal to minus 6. तो m and n कितना आ गया, m3 and n is equal to minus 6. करेक्ट. जदि दुईटा वेक्टर पैरेलल हो, कोफिशिएंट रेशियो इक्वल हो, तो m और n एटा पचार थिला m कोन और n कोन, m is 3 and is minus 6. So this is your answer. This is came in 2011. छोटे छोटे क्वेश्चन किंतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक एक मार्क क्वेश्चन, each 1 mark question. तो तीनटा 1 mark question होला. नाउ ए 4 mark question. गोटे 4 mark question ट्राई करबे. नेक्स्ट लुक क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट द वेक्टर्स this and this are the sides of a right angle triangle. एटा राइट एंगल ट्रायंगल केते होला हो, लेट a bar is equal to right angle triangle माने either one angle is 90 degree. एटा प्रूफ करियो पूरा आपन गोटा एंगल 90 डिग्री हो और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करियो. स्क्वायर ऑफ सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड. तो फर्स्ट वेक्टर को ए बार कंसीडर करछे. ए बार इज इक्वल टू 2 into i cap minus j cap plus k cap. दिस इज a bar. b bar is equal to I cap minus 3 into j cap minus 5 into k cap. This is b bar. And c bar equal to 3 into I cap minus 4 into j cap minus 4 into k cap. So these are a bar, b bar and c bar. तीनटा साइड बाहर करियो, तार लेंथ बाहर करियो. साइड कोन होची ab. One of the side is ab bar and ab bar is equal to b bar minus a bar. So this is b bar minus a bar. So b minus I minus 2i. I minus 2i is minus I. Minus 3j. Minus of minus is plus j. So minus 3 plus is minus 2j. Minus 5k minus k is minus 6k. This is ab bar. Now let us find the value of bc bar. So what is bc bar? bc bar होची c bar minus b bar. ये सब पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला. c bar minus b bar करंतु. c bar 3i minus I will be equal to 2i. Minus 4j plus 3j is minus j. Minus 4k plus 5k will be equal to k. ab bar, bc bar. Now ac bar. ac bar equal to c bar minus a bar. c minus a c bar minus a bar. Right? 3i minus 2i will be equal to I. Minus 4j plus j will be minus 3j.
minus 4k minus k is equal to minus 5. So you got all the three vector, तीन टा vector मिल गया. Now magnitude बाहर. Magnitude of AB bar माने length. AB bar जो vector होची तार length is magnitude, right? Length केंति बाहर करिए I रो coefficient रो square, J रो coefficient रो square, K रो coefficient रो square आउ तार root. This is the formula to find the magnitude. एटी देखो. एटी I रो coefficient केते होची -1, right? तो -1 रो square, J रो coefficient होची -2 रो square, आउ K रो coefficient होची -6, तो -6 रो square, आउ यार square root. 1 रो square हेगला 1, 2 रो square हेगला 4, 6 रो square हेगला 36. So this will be equal to square root of 41. Right? Now this is AB bar. Now what about BC bar? BC bar is equal to ये होची BC bar coefficient रो square 2 रो square plus J रो coefficient -1 रो square, K रो coefficient 1 रो square, यार square root. 2 square is 4, -1 square is 1, 1 square is 1, 4, 5, 6. So this will be root 6. This is BC bar. Now the value of AC bar. AC bar equal to, this is AC bar. So coefficient of I cap is 1, so 1 square. Coefficient of J cap is -3, so square of -3. Coefficient of K cap is -5, so square of -5 and the square root. 1 square is 1, -3 square is 9, -5 square is 25. So 9 plus 1 is 10, 10 plus 25 will be 35. Now A0 magnitude ro square equal to plus 35. Square root eliminate हेगला. Similarly B0 magnitude ro square is equal to 6 and AB0 magnitude ro square is equal to 41. So clearly देखा जाउची AB0 जो magnitude होची यार square is 41, which is equal to B0 magnitude यार square plus A0 magnitude ro square, which is 6. A0 magnitude तार square. So this is 41, which is equal to 35 plus 6. Satisfy करिएला. So this is your Pythagoras theorem. If the square of one side equal to square of sum of other two sides or sum of square of other two sides, then by Pythagoras theorem, these are the sides of a right angle triangle. These are the sides of a right angle triangle. Sides of right angle. बुझेला जदि आपन राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करिया होछ एमति करी प्रथम तीनटा साइड दिया आइतला तीनटा वर्टाइसेस दिया आइतला तीनटा वर्टाइसेस रु तीनटा साइड बाहर करी और तीनटा साइड बाहर कला पर तार मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर कर मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर कर पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई करिया पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई करला माने पाइथागोरस थ्योरम सबुले कोथुर सैटिस्फाई करे पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज सैटिस्फाइड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल देयरफॉर दीस आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन what the next question is if a bar is equal to 2i plus k b bar equal to I plus j plus k c bar equal to 4i minus 3j plus 7k then find the vector r bar which satisfies this r bar is a vector r bar गोटे vector जे कि कंडीशन को सैटिस्फाई करछ कोनटा कंडीशन को सैटिस्फाई करछ लोक गिवन r bar dot b bar this is given r bar cross b bar is equal to c bar cross b bar this is given तो राइट साइड जो c bar cross b bar है ताको लेफ्ट साइड को नहीं किया therefore r cross b minus c cross b will be equal to 0 so this also can be written as r bar minus c bar cross product with b bar equal to 0 देखो कौन कहली cross b bar कॉमन थिला तो r minus c cross b bar कर now 8 देखो ये गोटे वेक्टर r minus c is a vector b is a vector cross product of two vectors equal to 0 what do you mean by that जदि दुईटा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होची वेक्टर दिटा कोन हबो वेक्टर्स आर पैरेलल मतलब r bar minus c bar will be parallel to b bar r bar minus c bar will be parallel to b bar देखला आउ कोन देछि जदि दुईटा वेक्टर पैरेलल हेगला तो कंडीशन कोन हबो आउट कंडीशन हम देछि r dot a equal to 0 आउट कोन देछि r dot a equal to 0 so एठी हम एंति लिख परबा r bar minus c bar is equal to some lambda into b bar
तो आर बार कहते हैं आर बार इज इक्वल टू सी बार को सेपरेट नहीं आर बार इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी बार प्लस सी बार. So this is equal to lambda into b bar. What is b bar? B bar is I plus j plus k given in the question. I plus j plus k. This is b bar plus c bar. This is I plus j. This is b bar and this is c bar. C bar is 4 into I cap minus 3 into j cap plus 7 into k cap. Correct? Add कर दो. This is lambda into I cap plus 4 into I cap. Lambda I plus 4I. दुईटा जगह I common है. I common नहीं जानते. Lambda plus 4 into I cap. Lambda plus 4 into I cap. Similarly, plus lambda into j minus 3 into j. This is lambda into j minus 3 into j. So lambda minus 3 into j cap. ठीक समझी lambda into k plus 7 into k. So lambda plus 7 और दूसरी जगह common हो k cap. So this is the value of r bar. Now since what else is given? Given that r bar dot a bar is also equal to 0. डॉट प्रोडक्ट दो दीटा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एंती हो आई रो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिवे जे रो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिवे के रो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिवे और सब को ऐड करिवे. नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई लैम्डा प्लस 4. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ आई 2. तो लैम्डा प्लस 4 into 2 राइट प्लस जे रो कोएफिशिएंट होची लैम्डा माइनस 3 अब 80 जे रो कोएफिशिएंट 9 तो 0 into लैम्डा माइनस 3 काइंड ऑफ ए बार रे आपन जे कैप 9 तो कोएफिशिएंट करते है 0 80 k रो कोएफिशिएंट 1 और 80 k रो कोएफिशिएंट लैम्डा प्लस 7 प्लस 1 into लैम्डा प्लस 7 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो ये है गला मल्टीप्लाई कर दो 2 लैम्डा प्लस 8 सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. ये वैल्यू पूरा का पूरा 0 ही जो प्लस लैम्डा प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0. 2 लैम्डा प्लस लैम्डा विल बी 3 लैम्डा 8 प्लस 7 15 वो राइट साइड को निकली माइनस 15 एंड लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाय 3. Minus 15 divided by 3 which is equal to minus 5. So we got the value of lambda. Now but you need to find the value of r bar na. तो r bar देखो तो 80 होची r bar 80 lambda रो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करियो minus 5 plus 4 into I cap plus lambda is minus 5 minus 3 into j cap. Lambda is minus 5 plus 7 into k cap. बोलियो r bar. Therefore r bar is equal to minus 5 plus 4 so minus I cap minus 5 minus 3 minus 8 j cap 7 minus 5 so plus 2 into k cap. So this is the value of r bar and hence this is your answer. कौन कले बुझले given r एटा गुटे कंडीशन आपन दिया आइले r bar cross a b bar equal to c cross b. सिंपलीफाई कर देले c cross b टा ए पट नहीं के आसले cross b bar टा कॉमन नहीं गेले तो r minus c पैरेलल b हे गेले दीटा वेक्टर पैरेलल माने गोटे दुईटा रो गोटे अन्यटर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी बार को एपट नहीं गेले कंडीशन पड़ाइतला बी और सी सब्स्टिट्यूट कर देले आर बार मिल गेला लैम्डा फॉर्म रे आ गोटे कंडीशन दिया आइछ ना लैम्डा डॉट ए इक्वल टू 0 डॉट प्रोडक्ट नहीं गेले आर रो लैम्डा सहित सेति आपन लैम्डा मिल गेला पर एठी सब्स्टिट्यूट कर देले हियर वी हैव सब्स्टिट्यूट. एटा होचे 6 मार्क क्वेश्चन व्हिच वाज केम इन 2018 एग्जामिनेशन. द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर. तो ए रो पोजीशन वेक्टर हेगला ए बार बी रो पोजीशन वेक्टर बी बार और सी रो पोजीशन वेक्टर हेगला सी बार. प्रूव दैट ए बी सी आर कोलिनियर. 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. एटा प्रूफ करियर अछि. कोलिनियर माने कोन हबो वन वेक्टर शुड बी एक्सप्रेस्ड एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर. एटा प्रूफ करियर. सो ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बार. सो व्हाट इज ए बी बार? ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार. तो बी माइनस है एमती माइनस करिवे देखो 83i minus 2i 3i minus 2i will be I minus 2j minus j will be minus 3j k plus k will be 2 times k. This is AB bar. Now try to find the value of BC bar. BC bar केमती बाहर करिवे C bar minus B bar and C is this I minus 3i. I minus 3i will be minus 2i 4j plus 2j 4 plus 2 will be 6j minus 3 minus k तो minus 4k. याकू ए बी रो स्केलर मल्टीपल रे एक्सप्रेस करबेरा तो ए टू -2 कॉमन नै जे जतले -2 कॉमन नै जे दिस विल बी आई कैप -3 into j कैप +2 into k कैप केते कॉमन नेबे टिके ट्रिकी देखिबे एठी आई कैप दरकार एठी -2 आई कैप अछि कोन बाहर कोले आई कैप मिलिबो -2 तो -2 कॉमन नै गेले सो दिस कैन बी रिटन एज -2 into दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी बार सिंस वन वेक्टर इज एठी हम कोन कोले गोटे वेक्टर को आ गोटे वेक्टर स्केलर मल्टीपल रे एक्सप्रेस कर दल. जदि एमती करि पारिबा इफ वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a scalar multiple of other then the points are collinear. Therefore the
points A, B and C are collinear. Points A, B and C are collinear. Came in 2010. एथी खाली proof करे रच. Right? Now come to the next question. What the second question is? Second question is, write the unit vector along PQ bar joining P and Q. तो P और Q को join करिवा vector रो unit vector दरकार, मतलब PQ cap. And what is PQ cap? Unit vector मतलब vector divide by its own magnitude. Vector को तारा निजर magnitude रे divide करिवे. So for that, एटा करिवा पाए, this is your answer. एटा आपनो करिवार अछि. जदि एटा करिवार अछि, सेति पे कोन करिवे? PQ bar बाहर करिवे. So given what is P and what is Q? Given P, the coordinate of P is 7 minus 4, 5. Therefore P bar is the position vector. So 7 into I cap minus 4 into J cap plus 5 into K cap. This is P bar. And Q is given as 7, 1 and 5. Therefore Q bar is equal to 7 into I cap plus J cap plus 5 into K cap. Therefore PQ bar is equal to Q bar minus P bar. तो Q minus P कर दे, 7 minus 7 कितने गला? 0 into I cap. J minus of minus तो plus हो गला. तो 5 into J cap. 5K minus 5K will be 0 into K cap. So it is only 5 into J cap. Only 5 into J cap. So this is PQ bar. Now how do you get the magnitude of PQ bar? Magnitude कितनी बार करिए? I रो coefficient square, that is 0. J रो coefficient square, that is 5 का square. K रो coefficient square, 0 रो square. Square root equal to 5. दुटा तो 0. Our middle term the 5 अच्छी, 5 रो square 25 और square root कर दे 5 है. Therefore the unit vector along PQ bar is PQ cap, which is equal to PQ bar divided by PQ bar रो magnitude. तो PQ bar कितने है? PQ bar है 5 into J cap, magnitude है 5, 5 cancels, so this is J cap. So ये आपका आंसर बुझिया. तो एटा होची बेसिक्स, ये होची फॉर्मूला. यूनिट वेक्टर along any vector equal to vector divided by its own magnitude. कोई भी वेक्टर जे कोनोसी वेक्टर आपन दिया है तार जदि यूनिट वेक्टर पछारियो कोन करिए, सेही वेक्टर को तार मैग्नीट्यूड रे डिवाइड कर दो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The direction cosines of the vectors PQ bar where OP is this and OQ is this. डायरेक्शन रेशियो पहले प्रथम कोन करिए, डायरेक्शन रेशियो बाहर करिए. सो गिवन P रो कोऑर्डिनेट केते देछि 1 0 माइनस OP माने P bar, राइट. सो देयरफॉर P bar is equal to I cap plus 0 into J cap minus 2 into K cap. This is P bar. And what is Q? Q is given as 3 minus 2 and 0. Therefore the position vector of Q is Q bar, which is equal to 3 into I cap minus 2 into J cap plus 0 into K cap. Therefore PQ bar will be equal to Q bar minus P bar. Q bar minus P bar, which is this minus this. 3I minus I will be equal to 2 into I cap. Minus 2J minus 0J. So minus 2 into J cap. 0 minus of minus, so plus 2 into K cap. This is PQ bar. Right? Now, therefore DRS, direction ratios. DRS मतलब direction ratio. Direction ratio कौन है? जो वेक्टर मिले होते हैं इधर I J K रो जो कोफिशिएंट्स होते हैं, those are the direction ratio. तो इधर I रो कोफिशिएंट है 2, J रो कोफिशिएंट है -2, K रो कोफिशिएंट है +2. Direction ratio. Direction cosine रो फॉर्मूला कौन होची? Direction cosines are L is equal to A divided by square root of A square plus B square plus C square. M is equal to B divided by square root of A square plus B square plus C square. And N is equal to C divided by square root of A square plus B square plus C square. Right? ऊपर लिख दो. Therefore L is equal to A माने कहते हैं 2. 2 divided by 2 square is 4. Minus 2 square is again 4. 2 square is 4. So the square root. M is equal to minus 2 divided by square root of 4 plus 4 plus 4. And N is equal to 2 divided by square root of 4 plus 4 plus 4. So this is equal to 2 divided by square root of 12.
m is equal to minus 2 divided by square root of 12 and n is equal to 2 divided by square root of 12. So this is equal to 2 by 2 root 3 minus 2 by 2 root 3 and this is 2 by 2 root 3. 2, 2, 2, 2 and 2, 2 gets cancelled. So direction cosines are 1 upon root 3 minus 1 upon root 3 and 1 upon root 3. These are the answers. ठीक है जी. डायरेक्शन रेशियो माने वेक्टर कोएफिशिएंट, डायरेक्शन कोसाइन माने यूनिट वेक्टर कोएफिशिएंट. डायरेक्शन रेशियो जदि ABC अछि डायरेक्शन कोसाइन आनिवार फॉर्मूला एटा. दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द डायरेक्शन कोसाइन्स. डायरेक्शन कोसाइन आनिबा में फॉर्मूला रे ABC यूज कर दो. a by root of a square नथले यूनिट वेक्टर बाहर कर दे तार कोएफिशिएंट लिख दो. सेम डायरेक्शन कोसाइन्स आर ऑलवेज द कोएफिशिएंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन रेशियोस आर the coefficients of the vector. Okay, ये good important question. So बोल ऐसे question आसे. With given direction ratio, find the direction cosines, or with given direction cosines, find the direction ratio. ऐसे question आसे सब बोल. Question number 4. Find the unit vector perpendicular to both a bar plus b bar and a bar minus b bar. Unit vector perpendicular to both. देखो formula होची unit vector perpendicular to u bar and b bar. Unit vector perpendicular to u bar and v bar. जदि आपन दुईटी वेक्टर देछि गोटे u bar आ गोटे v bar, तो यूनिट वेक्टर जे u और v को परपेंडिकुलर हबो दैट विल बी u bar क्रॉस v bar डिवाइड बाय u bar क्रॉस v bar मैग्नीट्यूड. परपेंडिकुलर वेक्टर जदि दुईटा वेक्टर दिया छै गोटे u bar आ गोटे v bar, तार परपेंडिकुलर वेक्टर कोन हबो u क्रॉस v, तार यूनिट वेक्टर कोन हबो u क्रॉस v डिवाइड बाय u क्रॉस v द मैग्नीट्यूड. तो एठी u बार जगह रे कोन दिया छै अपन क्वेश्चन रे a बार प्लस b बार, v बार जगह रे कोन दिया छै a बार माइनस b बार. तो a प्लस b कर देबे u बार आसे गेला, a माइनस b कर देबे v बार आसे गेला. देन वी यूज द फॉर्मूला. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. What the question is given a bar is this, b bar is this. A bar plus b bar is equal to, now add the vector को add कर दो I plus I2 I cap, j plus 2j 3 into j cap, k plus 3k, so 4 into k cap. This is a plus b. And find the value of a minus b. A minus b equal to I cap minus I cap, so 0 into I cap. J minus 2j is minus j cap. K minus 3k is minus 2k cap. Now, vector perpendicular to both, what are the vectors? One is a plus b and the other one is a minus b. A plus b and a minus b is cross product of these two. A cross a plus b cross product with a minus b. So बोले बन रखो दुईटी वेक्टर आपन दिया आइछि. जदि तार परपेंडिकुलर वेक्टर पचाल द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a and b इज a क्रॉस b. तो एठी कोन दिया आइछि a क्रॉस a plus b a minus b दुईटा वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं. नाउ द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ विल बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू. अ क्रॉस प्रोडक्ट कैन बाहर करछंदी. क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग a determinant and the first row of the determinant is always I, j and k. Second row will be the coefficients of the first. ये थ्री कोएफिशिएंट कते अछि 2 3 4. Second coefficient 0, minus 1, minus 2. Now let us solve this. So this is equal to I cap into determinant solve करें जाना जल्दी जल्दी करो. 3 into minus 2 will be minus 6. Minus of minus 4 will be plus 4. Minus j cap into 2 into minus 2. So minus 4. 0 into 4 will be 0. Plus k cap into minus 2 minus 0. So minus 6 plus 4 is minus 2 into I cap. Minus minus plus 4 into j cap minus 2 into k cap. ठीक है. Now the magnitude. Find the magnitude. A plus b cross a minus b जो वेक्टर मिला उसका magnitude. Magnitude मतलब coefficient of I is minus 2. Minus 2 square is 4. Minus 2 square is 4. 4 square will be 16. And again minus 2 square will be 4 and the square root. 24, 16 plus 4, 20 plus 4 is 24 and root of 24 will be 24 को कैसे लिखेंगे 4 into 6 4 root हो जी 2 और 6 root के अंदर 6 will be under the square root, so 2 root 6.
This is a plus b cross a minus b. This is square root of 24, which is 2 root 6. Understood? Next, the unit vector is vector. What is the vector? A plus b cross a minus b. This is the vector. Divide by its own magnitude. Divide by a plus b cross product with a minus b. So this is equal to, the vector is minus 2I cap. It is the vector. I mean already calculate कर सकते हैं. Plus 4 into j cap minus 2 into k cap. Divide by magnitude is 2 root 6. ऊपर 2 common आसो. 2 common आसले minus I cap plus 2 into j cap minus k cap and divide by 2 root 6. So 2 and 2 will get cancelled and this is your answer. Then तो 8 मन रखियो अपन सब बोले. 4 मन रखियो, the vector which is perpendicular to both a bar and b bar is a cross b and the unit vector will be a cross b divided by a cross b the magnitude, right? अगला क्वेश्चन एठी हमर a b बदलते a plus b a minus b देतला. तो फर्स्ट कैलकुलेट a plus b, then a minus b, then find the dot, then find the cross product by using a determinant, then find the magnitude and divide. Came in 2019 exam. Recent garma garam question है. चल next question is ये आउट important question. The question says p bar equal to 1 by lambda into b cross c, q bar equal to 1 by lambda into c cross a, r bar equal to 1 by lambda into a cross b, and lambda is the scalar triple product. This is the scalar triple product. Scalar triple product, right? So lambda equal to a cross a by c का scalar triple product, which is not equal to 0. मतलब you can divide. जब भी कोई जिनस कोई गोटे जिनस तो मुझे देछि नॉट इक्वल टू 0 माने सेटा से क्वेश्चन रे कोड तो डिवाइड होतो, सेति पय सेटा डिफाइंड हेबा पय देछि कि नॉट इक्वल टू 0. काहे ना 8 लैम्डा अछि डिनोमिनेटर डिवाइड होछि, 8 लैम्डा अछि डिनोमिनेटर डिवाइड होछि, 8 लैम्डा होछि डिनोमिनेटर डिवाइड होछि टू गेट p बार. तो जदी डिवाइड होछि दैट हैज टू बी नॉन जीरो, सेति पय डिफाइन करा है ना. देन सो दैट a plus b plus c dot p plus q plus r equal to 3. ये प्रूफ करियर आज. नाउ let us write the value of p bar first. So what is p bar? P bar is 1 by lambda of b cross c. 1 by lambda of b cross c. So this is equal to b cross c and lambda is given as a, b, c. Lambda is given as a, b and c. Right? Now, the empty achi, so what will be the value of a dot p? A dot p equal to a bar dot p. And what is p bar? P bar is b cross c divided by abc. Divided by abc. Now what about a dot b cross c? A dot b cross c is always equal to the scalar triple product of abc. A dot b cross c कौन होता है? Scalar triple product होता है divided by scalar triple product. माने दो जाए cancel है. This and this will get cancelled. So answer is 1. B bar dot p bar is equal to b bar dot p is b cross c divided by abc. Divided by a b c. Numerator scalar triple product है but दुईटा repeated vectors. दुईटा repeated vector. कौन कौन repeated vector? b bar c bar divided by a bar b bar c bar divided by a b c. तो ऊपर जदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रे दुईटा वेक्टर आइडेंटिकल अछि, सो द आंसर इज 0. तो न्यूमरेटर 0 होगला. 0 by abc is also equal to 0. Similarly c bar dot p bar is also equal to c dot b cross c, c dot b cross c divided by abc divided by a b c. So this is c b c. Again दुईटा रिपीटेड वेक्टर. कौनटा रिपीटेड? c bar c bar. तो c bar जदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रे in any scalar triple product, if t vectors are identical, if two vectors are identical, then the value is equal to 0. In the same way, एमती जदि b dot p बाहर करिवे that will be 0. b dot q बाहर करिवे b dot q will be equal to 1 and b dot r बाहर करिवे that is also equal to 0. p q r ना. This is c dot p.
B dot P, B dot Q, B dot R. This will be 0. Similarly, C bar dot P bar. Similarly, C bar dot P bar is equal to 0. C bar dot Q bar is equal to 0. And C bar dot R bar, this will be equal to 1. ठीक है, मु गोटे बाहर कर दे सेम वे एठी आपण एंते लिख पारिबे. Similarly, we can also calculate the value of this. Now LHS जो प्रूफ करियो दिया छै तार LHS कोन होची A plus B plus C dot product with P bar plus Q bar plus R bar. केमते लिखबे A bar dot P bar plus A bar dot Q bar plus A bar dot R bar. ये रहेगा सब. Then plus B dot P plus B dot Q plus B dot R plus C dot P plus C dot Q plus C dot R. So A dot P 1, बाकी दुईटा 0. Similarly, B dot P 0, B dot Q 1, 0. Third is 0 plus 0 plus 1. So 1 plus 1 plus 1 equal to 3. That is your RHS and hence the proof. एकदम इजी क्वेश्चन. खाली लैम्डा बाम्डा देकी तुमको कंफ्यूज करियो चेष्टा कर. लैम्डा रा वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट कर देलो. P मिल गेला ताको कैलकुलेट कर दो. A dot P, B dot P, C dot P, then B dot P, B dot Q, C dot R, then that. ठीक है, एमती बाहर कर देबे सब. A dot P, this will be एटा होची A dot Q, sorry, this will be A dot Q, right? This is A dot Q. This is A dot R, A dot Q and A dot R, A dot Q and A dot R. एमती देखिए सब वही जो. ठीक है. So this is one more important question. This came in 2017 exam and that is a 6-mark question. Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज वेक्टर रो थर्ड वीडियो. या पूर्व वेक्टर दुईटी वीडियो अपलोड हो सारछि. आ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2019. जो जदि मो चैनल रो नुआ थिबे दैट इज कृष्णास मैथ्स. जदि मो चैनल रो नुआ थिबे चैनल को लाइक कर एंड सब्सक्राइब कर दे. आ प्रीवियस सब वीडियो देखियो चेष्टा करियो. सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मो वीडियो अपलोड करके पकेछि. जेमती डिटरमिनेंट हेगला, मैट्रिसेस हेगला, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट बोथ, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब मैं अपलोड कर सारछि. नाउ द टाइम टू अपलोड वेक्टर्स एंड देन 3D वेक्टर. सो लुक, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रथम क्वेश्चन कोन दिस देखंतु. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ A bar is equal to B bar plus C bar. A bar is B plus C, then write the value of A bar dot B cross C. This is what you need to find. Now A bar value कौन दी अपने को B plus C. B plus C is A bar. B cross C. So this is equal to B dot distributive property apply करते हैं. B dot B cross C. प्रथम B dot B cross C, then C dot C cross, then C dot B cross C. Right? तो B dot B cross C, B dot B cross C कौन हो? The scalar triple product. A dot B cross C जेमती हो जी B dot B cross C. But एठी दुईटी repeated vector B bar and C bar plus C bar B bar and C bar. जदि scalar triple product रे दुईटी vector repeated हो जेमती एठी दुईटा repeated, एठी दुईटा repeated. If any two vectors in any two positions, दुईटा vector कोई भी दुईटा position रे जदि scalar triple product identical होचंदी, then the answer will be 0. So 0 plus 0 will be equal to 0. So this is the answer of the first question. Now come to the second one. Next question which is, next question is A cross B the whole square plus A dot B the whole square equal to 144. Then write the value of AB. So look, given A bar cross B bar the whole square plus A bar dot B bar the whole square. This is equal to 140. A cross B is A bar B bar sin theta the whole square. A dot B is AB cos theta. A B cos theta the whole square. And this is equal to 144. Right? So A square, ये वाला A square B square sin square theta. जैसे स्क्वायर लिखिए ना मैग्नीट्यूड लिखिए दरकार नहीं. दिस इज A square
b square cos square theta and this is equal to 144. कौन कॉमन आसला a square b square कॉमन आसला a square b square into sin square theta plus cos square theta, that will be 1. सेटा 1 हेगला. So this is equal to 144. Sin square plus cos square को 1 कर देले तो a square b square into equal to 144. Since sin square plus cos square is 1, so a into b equal to square root of 144 and that is equal to 12. Plus or minus लिखिए नहीं काहेंगे वेक्टर रो मैग्नीट्यूड माने always positive. Length of the vectors are always positive. So you can use this as a formula also. Formula कौन होची a cross b the whole square plus a dot b the whole square. This is equal to a square b square. This is equal to a square b square. एटा एज ए फॉर्मूला भी आपण यूज कर पारिबे. मु देडी डिराइव करी कर देली आपण एज ए फॉर्मूला यूज कर पारिबे. जदि आगु को सम प्रॉब्लम आछे सो यूज दिस एज ए फॉर्मूला. राइट a cross b the whole square plus a dot b the whole square will be always equal to a square b square and a square जेतले लिखिबे मैग्नीट्यूड लिखिबो दरकार नै काहे ना a square is same as a square. राइट काहे ना सेटा ऑलरेडी लेंथ माने मैग्नीट्यूड तो वेक्टर ऊपर बार लिखे दरकार नै. लुक नेक्स्ट वन a bar का magnitude. The magnitude of a bar is 3, magnitude of b bar is 2, a dot b is 0, then write the value of a cross b. So I have already told you, मैं एबे कहतली ना a cross b रो square plus a dot b रो square, a dot b रो square is equal to a square b square. Just पूर्व क्वेश्चन हम सॉल्व करथि. Now a cross b आपण मानिबार अछि तो keep it as it is. एटा को फाइंड करियार अछि ना. लुक यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a cross b. एटा को एज इट इज रख दियो. a cross b value is given as 0, so this is 0 equal to a square b square. a is 3 square, b is 2 and 2 square. So this is a bar cross b bar the whole square equal to 3 square is 9, 2 square is 4, 9 into 4 will be 36. Now this is the square of a cross b. Now you need to find the value of only a cross b. Jodi only a cross b anibar अछि कौन करिवे take the square root. Take the square root. So this is equal to square root of 36 and that is equal to 6. So this is your answer. देखो तो previous formula टा यूज कर देले हम. This is the formula which we have used. ए formula यूज कर देले डायरेक्ट यूज करने previous क्वेश्चन हम सॉल्व करथले आ से formula टा यूज कर देले जल्दी हेगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो formula हम करछे सेही formula टा को प्रूफ करिवा. दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड. देखो ये कौन देछि दिस इज योर LHS. व्हाट द LHS is? LHS is a bar cross b bar the whole square. Now what is a cross b? A cross b equal to a bar the magnitude, b the magnitude into sin theta. A cross b is ab sin theta na, the whole square. And this also can be written as magnitude of a bar square, magnitude of b bar square into sin square theta. So this is equal to magnitude of a bar ka square, magnitude of b bar ka square, sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. When you multiply this, what you are going to get? A bar square into b bar square into 1, same, and then a bar square into b bar square into cos square theta, right? So a bar square can be written as a square, b bar square can be written as b square minus यहाँ देखो ये a रो स्क्वायर अच्छी, b रो स्क्वायर अच्छी, cos theta रो स्क्वायर, तो स्क्वायर हमें बाहर रख देबा. This is a का magnitude, this is the magnitude of b and this is square of cos theta. So this is ab cos theta. Now what is ab cos theta? ab cos theta is nothing but a bar dot b bar. It dot product formula अछि यार square. So this is what your RHS required. Okay. एटा गुटे इनइक्वालिटी. आमे जेई रे एटा को सब बेले मन रखछे. जेई रे एटा को डायरेक्ट यूज करछे. You are using directly. दो दीटा वे रे मन रख करे a cross b square plus a dot b square equal to a square b square और a cross b square equal to a square b square minus a dot b the whole square. This is the way to prove. अब इटा 4 मार्क रो क्वेश्चन आस्तले एग्जाम रे 2019 और टेक्सचुअल क्वेश्चन नमदे. Now obtain the volume of the parallel pipette. Parallel pipette रो वॉल्यूम दरकार. Sides are a bar is one of the side, b bar and c bar. जदि वॉल्यूम आनिबार अछि, this is the scalar triple product of a bar, b bar and c bar. The volume of parallel pipette is volume of parallel pipette is
V is equal to the scalar triple product of A bar, B bar, C bar. Right? The scalar triple product of A, B and C. And এটা কেমতি ক্যালকুলেট করছে স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট অলওয়েজ ক্যালকুলেটেড ইউজিং এ ডিটারমিনেন্ট এ র কোএফিশিয়েন্ট কোন কোন আছে 2 -3 আর 4 b র কোএফিশিয়েন্ট আছে 1 2 -1 and the coefficients of c are 3 -1 2 याको सॉल्व कर देंगे अब काहेकि ना वॉल्यूम अछि सेति क्यूबिक यूनिट्स अब तार यूनिट्स तो 2 into 4 - 1 will be 3 डायरेक्ट लिखछि -3 और साइन माइनस अछि minus of minus will be +3 this is 2 + 3 plus 4 into -1 -6 2 into 3 will be 6 2 + 3 5 5 3 are 15 and -1 -6 will be -7 into 4 will be -28 so 15 plus 6 is 21 minus 28 that is equal to -7 correct 2 -3 4 1 2 -1 3 -1 2 so 2 into 4 -1 will be 3 minus of -3 will be +3 2 + 3 is 5 4 into -1 -6 will be -7 so 6 and 5 3 are 15 21 -28 -7 but volume तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना volume will be equal to 7 cubic units I zero coefficient के एपट सेपट दे देते अपन वॉल्यूम नेगेटिव आ जाता है किंतु वॉल्यूम will be always positive take a mod of this okay write a vector normal to this and this normal vector means the vector which is perpendicular to a bar and b bar मान लियो let a bar is equal to जोड़ा first vector दिया है ताको a bar नहीं जानते a bar is equal to I plus k and b bar will be equal to I plus j the vector normal to both a bar and b bar is a bar cross b bar the vector normal to that is perpendicular to normal to मतलब ब्रैकेट रे मु लिख दउची परपेंडिकुलर टू यार मतलब से अब जदी को वेक्टर दीटा वेक्टर नॉर्मल वेक्टर माने दुटा वेक्टर जो परपेंडिकुलर वेक्टर आउची तार कथा आउची राइट so the vector which is perpendicular to both a bar and b bar is same as the normal vector of a bar and b bar so the vector normal to or perpendicular to both a bar and b bar is a bar and b bar is a bar cross b bar that is a bar cross b bar equal to केंति बाहर करे डिटरमिनेंट ना फर्स्ट रो इज I j k इथे I रो कोएफिशिएंट 1 j नाही 0 k रो कोएफिशिएंट 1 I रो कोएफिशिएंट 1 0 1 k नाही तो k रो कोएफिशिएंट 0 so this is equal to I cap into 0 minus 1 डिटरमिनेंट तो सॉल्व करिए minus j cap into 0 minus 1 and plus k cap into 1 minus 0 so this is equal to minus into I cap minus minus plus j cap and plus k cap is the normal vector so ये 2011 रास्ता and this is the textbook question so बोले मन रखो जदी normal vector कथा होची माने perpendicular vector कथा होची the vector which is perpendicular to both a and b is same as the normal vector of a bar and b bar तो normal vector में cross product में so let's move to the second question find the area of the parallelogram which diagonals are the vectors this look if जदी गोटे वेक्टर parallelogram अछि जरा diagonal अछि d1 and d2 with given diagonals area of the diagonal area आनिवार formula अछि half of magnitude of d1 bar cross d2 bar this is with given diagonals जदी side दिया है if a bar and b bar are the adjacent sides then area equal to only cross product of a cross b जदी diagonal अछि half रे multiply करिवे diagonal रे half रे multiply करिवे नाही correct so let's move given d1 diagonal 1 na diagonal 1 is equal to 3 I cap plus j cap minus 2 k cap this is d1 bar and d2 bar is equal to I cap minus 3 into j cap plus 4 into k cap this is d1 and d2 now find the value of d1 cross d2 find the value of d1 how do you get the cross product by using a determinant I j k now in d1 the coefficients are 3 1 and minus 2 in d2 this is 1 minus 3 and 4 now let us solve this so this is equal to I cap into 4 minus 6 4 minus 6 will be minus 2 minus j cap into 12 plus 2 12 plus 2 will be 14 plus k cap into minus 9 minus 1 will be minus 10 so this is equal to minus 2 into I cap minus 14 into j cap
minus 10 into k cap. Now let us find the magnitude of this. d1 bar cross d2 bar the magnitude. Minus 2 का square. Magnitude केंद्र बाहर करिए. ij के रो coefficient रो square अवतारा root. Minus 2 square minus 14 square then minus 10 का square and the square root. Minus 2 square will be 4. This is equal to 4 plus 14 square is 196. 10 square is 100. So 196 plus 4 will be 200 plus 1 will be 300 and square of 300 can be written as 100 into 3. 100 into 3. Root of 100 will be 10. 10 root 3. So this is d1 cross d2. Therefore area of the parallelogram is area of the parallelogram. Parallelogram. This is area of the parallelogram. Is half of d1 cross d2 the magnitude. This is when the diagonals are given. So the area is the same form. Khali half rahibani a cross b. So this is half of 10 root 3. 2 ra cancel kar diyo. This will be 5 root 3. This is the answer. Area is the square units selected. Right? This was came in 2011. Then that is again a textbook question. So let's move to one more question. Time pass बिल्कुल करेगा नहीं. Exam paper होती. तो rigorously पढ़ेगा. Determine the value of m for which the following vectors are orthogonal. So let us understand what is orthogonal. Orthogonal is nothing but perpendicular. Orthogonal is perpendicular vectors. If two vectors are perpendicular, then their dot product is 0. So a bar dot b bar equal to 0 if and only if a bar perpendicular to b bar. What is if and only if? माने दुईटा जगह हो. दुईटा जगह माने कौन हो? जदि दुईटी वेक्टर परपेंडिकुलर से मानकर डॉट प्रोडक्ट 0. उल्टा कहिबे जदि दुईटी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट 0 दे आर परपेंडिकुलर. So in both ways, right? So here is given. Let a bar vector consider कर दो. A bar equal to m plus 1 into I cap plus m square into j cap minus m into k cap. Let this will be a bar. And b bar is the second vector, m square minus m plus 1 into I cap minus m into j cap plus k cap. A bar and b bar. These are perpendicular. Jodi perpendicular achandi, therefore their dot product is 0. Semanakar dot product kaun hojo 0. Dot product kenji baar karibe I dot I 1, j dot j 1, k dot k 1. Remaining all are 0. So I ro coefficient m plus 1 into this is m square minus m plus 1. M square into minus m will be minus m cube. Minus m into 1 will be minus m. And this is equal to 0. Multiply kar diyo. M into m square will be m cube minus m square plus m square minus m plus 1 minus m cube minus m equal to 0. Minus m cube plus m minus m gets cancelled. Minus m square plus m square gets cancelled. Minus m को right side ले लीजिए. M equal to 1. ओह बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए कि मतलब बड़ा कैलकुलेशन होगा किंतु एक मात्र क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा. राइट. So this was came in 2011 question. तो खाली इंपोर्टेंट यही बेसिक्स मान रखिए. जदि दुईटी वेक्टर ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर और जदि दुईटी वेक्टर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. डॉट प्रोडक्ट केंति बार करिए I डॉट I को 1 करिवे, j डॉट j को 1 करिवे, k डॉट k को 1 करिवे. रिमेनिंग ऑल आर 0. Question number 4. This is a very important question. LHS question based on scalar triple product. This is a bar plus b bar plus c bar and c bar plus a bar. The scalar triple product all these three equal to 2 times of a bar, b bar, c bar. So this can be written as a bar plus b bar dot product with b plus c cross product with c plus a. Right? A plus b dot b plus c cross c plus a. Now a dot b cross c का फॉर्मूला ऐसा ही है. So this is equal to a plus b dot को as it is रख दिया तो क्रॉस प्रोडक्ट बाहर करो. This is b cross c, b of cross product c सहित. So this will be b bar cross c bar plus b bar cross a bar plus c bar cross c bar. C cross c कौन है जो 0 ही जो पर जाएगा c cross. So this is equal to this will be a bar plus b bar dot product with
This is B cross C plus B cross A. C cross C will be 0 bar plus C cross A. Now take the dot product with A and then with B. So A सहित सबुरे dot product. So A bar dot B bar cross C bar plus A bar dot B bar cross A bar plus A bar dot C bar cross A bar. Then with B plus B bar dot B cross C plus B bar dot B cross A plus B bar dot C cross A. So this is equal to A bar dot B cross C equal to A bar B bar C bar. A dot B cross A equal to A bar B bar A bar plus A dot C cross A equal to A bar C bar A bar. B dot B cross C will be B bar C bar. B dot B cross A equal to B bar A bar. B dot C cross C will be equal to B bar C bar A bar. Okay, so this is equal to ABC. This is your A bar, B bar and C bar. A, B, A, these two are identical. So the scalar triple product है कोई भी दो vector identical, then the value is 0. Here also A and A are identical, so 0. B and B are identical, therefore 0. B and B are identical, therefore 0. B, C, A, these are in cyclic order. No vectors are identical, but they are in cyclic order. So cyclic order vectors को हमें A, B, C लिख करेगा. A, B, C is same as B, C, A is also same as C, A, B. So A bar, B bar, C bar plus A bar, B bar, C bar will be equal to 2 times A bar, B bar, C bar, and that is what your RHS is. So it's a very important question. ये यारो जेई रे मध्य आछे question एमती देतो this is 2 times जदि माइनस हेगला प्लस जागर माइनस हेगला 0 हां मन रखिए इंस्टेड ऑफ प्लस जदि क्वेश्चन रे माइनस देछि तो आंसर केते आसो 0 आसो प्लस रे 2 टाइम्स A bar B bar C bar माइनस रे केते आसो 0 आसो अब सॉल्व करे टेक्निक एकदम से सेम now move to next question. What the next question is? This is a proof by vector method that the altitudes of a triangle are concurrent. गोटे ट्रायंगल रो जदी अल्टीट्यूड बाहर करिवे से अल्टीट्यूड कोन हो concurrent हो. What do you mean by that? Concurrent मतलब all are passing through a single point. So let this vector is A, this point is B, this point is C, and this is a triangle ABC. Now let us draw 3 altitudes. This is one of the altitude. Let this will be AD. Draw one more. BE. And consider that AD and B are passing through the point P. दुईटा straight line अछि कोई ना कोई point रे पास करियो. Let the point be P. By using these two, हमें कौन proof करते हैं? AD and B are two altitude and they are passing through P. By using these two, we will prove that the third altitude which is passing through C, third altitude कौन होगा? C रू पास करियो. जो altitude का C रू पास करियो, that also will pass through P. जदि third टा भी P रू पास करियो ना, है गला concurrent. तो कौन proof करेगा? Let AD, PE and CF are the altitudes. Are the altitudes of triangle ABC. Triangle ABC रो ये altitude. जदि let AD and BE passing through P. AD and BE passing through P. Passing through P. यदि AD and BE P रू पास करिवे, therefore AD bar perpendicular to BC bar. Why? Because they are the altitudes. So the AD bar perpendicular हो, since AD passing through P, AD BC को perpendicular है, काहे ना altitude माने perpendicular, लंबो, हाँ perpendicular, लंबो जोड़ा को तो सेटा, right? तो AD perpendicular to BC. And since AD जो line है ना, से P रू पास करछि, therefore AP is also perpendicular to BC. जदि perpendicular हेबले, ए दुईटा वेक्टर रो जो डॉट प्रोडक्ट होबो, that will be always equal to 0. AP dot BC equal to 0. Now AP को केमति लिखिबे? AP can be written as P bar minus A bar
dot product with C bar minus B bar, and that is equal to 0. So this is equal to P bar dot C bar minus P bar dot B bar minus A bar dot C bar plus A bar dot B bar equal to 0. Let this will be equation number 1. Now BP in the same way, BP dot AC is also equal to 0. BP matlab P bar minus B bar dot product with AC matlab C bar minus A bar, and this is also equal to 0. So this is equal to P bar dot C bar minus P bar dot A bar minus B bar dot C bar minus plus B bar dot A bar, and this is equal to 0. Let this will be equation 2. तो ये दुईटा इक्वेशन को यूज करिए आमे प्रूफ करिया को चेष्टा करिया कि सीड एफ इज आल्सो पासिंग थ्रू पी, सी एफ को थ्रू पास करियो, पी रू पास करियो, देयरफॉर सी पी परपेंडिकुलर टू ए बी. ओके, तो दुईटा जब माइनस कर दियो तो इक्वेशन 1 माइनस 2 इंप्लाइज पी डॉट सी माइनस पी डॉट सी 0 होगा, ये प्लस है जो तो माइनस पी डॉट बी प्लस पी डॉट ए माइनस ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी माइनस बी डॉट एटा कैंसिल होके 0 होगा. तो फर्स्ट दुईटा टर्म रू यदि पी बार डॉट को कॉमन नहीं जाए दिस विल बी ए बार माइनस बी बार, ए दुईटा रू यदि सी बार डॉट को माइनस सी बार नहीं जाए कॉमन, माइनस सी बार को यदि कॉमन नहीं जाए, इफ यू टेक माइनस सी बार डॉट देन दिस विल बी बी बार माइनस सी बार ना, so this will be a bar minus b bar and this is equal to 0. So this will be p bar minus c bar dot product with a bar minus b bar, this is equal to 0. P bar minus c bar is cp bar dot product with b bar minus a bar minus b bar is ba bar, this is equal to 0. If the dot product is 0 then cp bar is also perpendicular to ab bar. That means CF passing through, CF is passing through P, hence concurrent, hence they are मतलब common है, altitudes are concurrent. Concurrent माने बुझे होती है, concurrent माने more than 2 lines passing through a single point. The basic line गोटे point रू pass करे. So this is again an important question. This was came in 2006, 12 and many more times. यही क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एटा भलो प्रैक्टिस करिए, राइट. तो एमती मु वीडियो गोटे गोटे नहीं के आसी, राइट. अभी नेक्स्ट वीडियो हम कोन आनिबा, नेक्स्ट वीडियो आई विल कम इन विथ 3D इंपोर्टेंट ना, 3D रो लाइन, 3D रो प्लेन तार अलग अलग कांसेप्ट आनिबा और तार क्वेश्चन आनिबा, राइट. ठीक अछि. जदि मो चैनल रे नुवा अछि मो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और मोर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करे, हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करिए. मिसबा नेक्स्ट लेक्चर और सेतल पर्यंत पढता. गुड लक.